वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम पढ़ा इंडियन हिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हिस्ट्री कौन आम जाना आम स्टार्टिंग रु पढ़ा मुझे स्टार्टिंग रु पढ़ले आपण को इजी हम। तो देखंतु व्हाट इज हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। The English word history is derived from Greek word historia, meaning research, inquiry or investigation. History टा Greek word रू आसी अछि जहाँकि historia. The Greek historian Herodotus was the first real historian of the world. The Greek historian होउछन्ति कोन real historian of the world रो। तो देखो हीरोडोटस को कौन कहती। हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहती। तो देखो द जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड von रांके होउछन्ति कौन द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। द फादर ऑफ हिस्ट्री होउछि हेरोडोटस, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री होउछि लियोपोल्ड von रांके। एटा मन रखिबे। एटा कौन 1795 जन्मग्रहण करथिले 1886 मसीह तांकर देहांत होइथिला। तो देखो तो सर्टकट रे एमती बुझेले मो साथी एमती आम पाठ पढ़िले आपणकर भलसे मन रही। तो देखो तापरे द जर्मन फिलोसोफर हेजेल होउछन्ति कोन द हिस्ट्री ऑफ रिपीट इटसेल्फ। लैटर जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर कार्ल मार्क्स extend the history repeats itself first tragedy and second as first। एटा से इम्पोर्टेंट नुह तथापि पढ़ीदेवाटा ठीक। तो अकॉर्डिंग द ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. Carr history is a continuous process interaction between historian and his facts and a unending dialogue between the present and the past। तो मुझे इम्पोर्टेंट मुझे मार्क करदेवी जानीला। ए सिस्टम ऑफ डेटिंग सबू इम्पोर्टेंट किंतु सब जगह इम्पोर्टेंट जोटा टिक भलसे पढ़ले कौन एग्जाम प्रोबेबल सब इम्पोर्टेंट करा जोटा मु मार्क करदेवी सेटा एग्जाम प्रोबेबल। तो देखो ए सिस्टम ऑफ डेटिंग, सिस्टम ऑफ डेटिंग कौन BC एंड AD। BC इज द एक्रोनियम ऑफ बिफोर क्रिस्ट। BC होउछि कोन एक्रोनियम ऑफ बिफोर क्रिस्ट। दिस इज एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। सो द ईयर बिफोर द बर्थ जीसस क्रिस्ट इज नोन एज बिफोर क्रिस्ट। इट इज डिनोटेड बाय BC। BC माने कोन होउछि कोन बिफोर क्रिस्ट। तो गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 563 BC and died in the 483 BC। Alexander the Great was born in 356 BC and died on 323 BC। BC माने कौन बिफोर क्रिस्ट। तो आड माने कौन जानो तो एटा एक्रोनियम बिफोर क्रिस्ट, एटा एक्रोनियम आनो डोमिन। आनो डोमिन कौन जेसस क्रिस्ट वाज क्रूसिफाइड इन 30 आड। आड माने कौन आनो डोमिन। तो ये जानते ये खाली बस। तो टाइम लाइन कौन द लाइन डिस्प्लेइंग द इवेंट ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड टाइम लाइन। देखो तो BC होची कौन बिफोर क्रिस्ट, AD होची कौन आनो देवेन। बिफोर माने पूर्व, एटा होची आड माने एपटू को जानि हैला। तो लेफ्ट को एटा राइट एटा बिफोर, एटा कौन होची आनो डोमेन। तो फ्रॉम द एबोव मेंशन टाइम लाइन इट इज क्लियर दैट ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। एटा होची कौन BC होची बैकवर्ड, एटा होची कौन ये सब होची कौन अपवर्ड। तो BC होची बैकवर्ड और AD होची फॉरवर्ड जानी हैला। देखंतु बर्थ क्रिस्ट आर बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, एटा सेमते AD कौन फॉरवर्ड। तापरे
ये सब तो जानीपारे सब सेमती खाली देती हिस्ट्री लिखा अच्छे जोटा इंपोर्टाट मुझे तापर टाइम ग्लोसरी कौन द ग्लोसरी रिलेटिंग टू टाइम इज नोन एज टाइम ग्लोसरी द ग्लोसरी रिलेटिंग टू टाइम इज नोन एज टाइम ग्लोसरी Some important terms associated with time are decades, first half, second half, century, millennium, किरका देखो द पीरियड ऑफ 10 years को कौन कहती डिकेड आप जानते तो जमी फास्ट हाफ मान कौन फास्ट 50 years ऑफ ए सेंचुरी दैट इज द पीरियड ऑफ फास्ट ईयर टू 5th year तो फास्ट हाफ माने कौन कहती 50 year को बुझाए सेकेंड ईयर को कौन कहती लास्ट 50 year ऑफ ए सेंचुरी दैट इज द पीरियड ऑफ 51 year टू 100th year जानी है सेंचुरी माने 100 द पीरियड ऑफ 100 years मिलेनियम द पीरियड ऑफ 1000 years किरका इफ द एग्जैक्ट date is not known then the word kirka used with the date in short kirka is denoted as ca or c example c केते 1500 BC होची 600 BC the Vedic culture period means that the exact date of a Vedic culture period not known what is somewhere close to that एटा कौन सेमिति किसी आर डेट न थाए जो कौन से डेट्र अनोन थी तो यहाँ क्रिका यूज हुए तो देखो तो फास्ट डिकेड माने कौन 10 years फास्ट हाफ माने कौन फास्ट हाफ माने फास्ट 50 year सेकेंड हाफ माने लास्ट 50 year अप टू 100th year तो सेंचुरी माने द पीरियड ऑफ 100 years मिलेनियम माने द पीरियड ऑफ 1000 years तो आमे माने पढ़िले डिकेड कौन फास्ट हाफ कौन सेकेंड हाफ कौन तो आर एग्जांपल जानिला परे आपण माने जानि परिबे केउटा डिकेड ईयर केउटा फास्ट हाफ ईयर तो जानि परिबे देखंतु एग्जांपल टी फास्ट डिकेड ऑफ 20th century एडी मीन्स एडी माने कौन एनो डोमिनी द पीरियड फ्रॉम 1901 AD टू 1910 AD तो जानीपारे यार ड्यूरेशन 1901 टू 1910 तो कौन 10 years डिफरेंस ना नहीं तो यहाँ हूँ कौन डिकेड ईयर जानीला तो देखु 50th डिकेड ऑफ 20th century AD मीन्स द पीरियड फ्रॉम 5th डिकेड of 20th century AD means the period from 1941 AD to 1950 AD जानी है इटा तो कौन हो 10 डिफरेंस हो 10 year डिफरेंस माने कौन डिकेड ईयर द पीरियड ऑफ 10 years तो देखो 8th डिकेड ऑफ 20th century AD means the period of 8th माने कौन 8 माने 80 तो द पीरियड ऑफ यहाँ कौन 1971 AD टू 1980 AD जानी है तो यहाँ सेमती जापर और लास्ट डिकेड 20th century AD मीन्स द पीरियड ऑफ 1991 AD टू 2000 AD जानी है सेमती द फास्ट हाफ माने कौन द पीरियड द फास्ट हाफ माने कौन फास्ट 50 years ऑफ ए सेंचुरी दैट इज द पीरियड फ्रॉम द फास्ट ईयर टू 50 year जानी तो देखु यहाँ तो जानी तर एग्जांपल लक्ष्य कर द फास्ट हाफ 20th century AD मीन्स फ्रॉम 1901 AD टू 1950 जानी है आर कौन 50 year डिफरेंस तो सेकेंड सेमती कौन 50 टू यहाँ कौन स्टार्टिंग रु फास्ट रु कौन फास्ट रु 50 year यहाँ सेमती कौन लास्ट रो लिखा देखो लास्ट 50 year ऑफ ए सेंचुरी तो से देखो फ्रॉम 1951 AD टू 2000 AD तो तापरे 6th century
BC means कौन BC माने कही बिफोर क्रिस्ट देखो 600 BC टू 501 BC कौन कही ता ड्यूरेशन बिफोर माने कौन एटा फास्ट अच्छी तो बिफोर तार पूर्व तापर कौन देख 4th century BC means 4th century 400 BC to 301 BC सेमती 16th century AD means 16th century AD माने कौन आफ्टर कही एटा कौन बैकवर्ड एटा फॉरवर्ड तो देख 1501 AD टू 1600 AD तो सेमती 20th century AD means 1901 AD to 2000 AD सेकंड मिलेनियम BC सेकंड मिलेनियम मीन्स माने देखंतु 2000 BC टू कौन 1001 एटा कौन बैकवर्ड एठो बैकवर्ड आसला माने कौन पछुको तो कम आसीबो सेमती फास्ट मिलेनियम BC तो कौन 1000 BC टू 1 BC जानी हैला तो सेमती फास्ट मिलेनियम AD 1 AD टू 1000 AD एटा कौन फॉरवर्ड सेमती जानिबे आ पीरियड को देखंतु गोटे पीरियड आमर अच्छी कौन गोटे बाइफार्टाइट डिवीजन अच्छी गोटे ट्राइफार्टाइट डिवीजन अच्छी बाइट्राइफाइट माने कौन देखो बाइट्राइफाइट माने कौन टू पीरियड हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पीरियड गोटे प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक द पीरियड दैट हैज नो रिटन एविडेंस इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड माने कौन जानिला द पीरियड दैट हैज नो रिटन जो एविडेंस को लेखा जाई पारे ना सेटा होची कौन प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड द पीरियड दैट हैज रिटन एविडेंस इज नोन एज हिस्टोरिक पीरियड हिस्टोरी जो पीरियड को लेखा जाई थाए तो सेटा होची कौन हिस्टोरिक पीरियड इन द अदर वर्ड द पीरियड बिफोर the beginning of writing is called prehistoric period and the period after beginning of writing is known as historic period. The time period of prehistoric period is accepted as 30 lakh BC to 600 BC and the time period of historic period as 600 BC to till date. कौन होची ना प्री हिस्टोरिक पीरियड एक्सेप्ट कर कौन 30 लाख BC टू 60 BC तो टाइम पीरियड हिस्टोरिक पीरियड जानी हैला तापर देख ट्राइफार्टाइट डिवीजन गोटे बाइफार्टाइट पढ़ी तापर ट्राइफार्टाइट बाइट्राइफाइट माने टू पीरियड ट्राइफार्टाइट माने 3 पीरियड तो देखंतु एटा कौन द ट्राइफार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इज मोर प्रिविलेंट to practice according to this history is divided into 3 periods गोटे prehistoric गोटे protohistoric and गोटे कौन historic जानी तो गोटे prehistoric period कौन photohistoric period कौन historic period कौन आसतु जानिबा टाइम पीरियड तार देखो ऊपर एका टेबल है नेम ऑफ द पीरियड टाइम पीरियड डेफिनेशन एंड एग्जांपल देखो प्रीहिस्टोरिक पीरियड ता टाइम पीरियड टा होची 30 लाख BC टू 2500 BC एटा मन रखिबे एटा मन रखले जानिबे सेमती फोटो हिस्टोरिक पीरियड रा टाइम पीरियड टा कोन 2500 BC टू 600 BC हिस्टोरिक पीरियड रा टाइम पीरियड टा होची कोन 600 BC टू टिल डेट तो देखंतो डेफिनेशन एंड एग्जांपल prehistoric period the period for which no written evidence is available that is lithic period तापर देखंतु फोटो हिस्टोरिक पीरियड माने कोन the period for which written evidence is available but either their script has not been deciphered or their written documents have not been confirmed with archaeological evidence that is example Indus civilization and Vedic culture in the case of Indus civilization we have not yet been able to decipher their script and in the case
of Vedic culture, we have not sufficient archaeological evidences to confirm written evidence of that period. ये फोटो पीरियड ହେଉଛି आर डेफिनेशन भलसे पढ़ीदेले आपको मन रहिबाकू इजी हेबो तापर हिस्टोरिक पीरियड रो डेफिनेशन हिस्टोरिक पीरियड 600 BC टू टिल डेट तो ता डेफिनेशन देखो द पीरियड फॉर व्हिच रिटन एविडेंस इज अवेलेबल एग्जांपल देखंतु महाजनपद पीरियड टू टिल डेट तो आज आम एति पढ़ा तापर आम आहरी इंडियन हिस्ट्री उपर बहुत किसी पढ़ा तो अल्प अल्प पढ़ले मन रहा जानी है तो थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।